Hello, 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 hello. Hello, hello. All right, guys. राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक और कंटिन्यूड लाइव स्ट्रीम में। और आज हम सीखेंगे JWT के बारे में। फर्स्ट विल टॉक अबाउट JWT प्रॉपर्ली एंड देन और आई वाज सेइंग आज हम JWT के बारे में सीखेंगे, समझेंगे एंड देन वी आर गोना create controllers revolving around JWT and all. ठीक है, तो यहाँ पे पहले वो हुआ करता था ना। Alright, I don't remember. But what JWT is? So JWT stands for JSON Web Token. Basically, is a token which is sent from client to server to basically authenticate is not the right word, authorize the user, right? So it has three different parts. So this is a sample JWT. This is the first part. So this is encoded header. Second part is encoded payload, whatever payload you want to share across. And the third one is this encoded secret output, or you can call. So this is what JWT is about. Of course, that was not the best explanation. I'm not good with it. Plus, this is not a tutorial. It's more of a you already know basics about JWT and we are gonna implement it. Although I'll still try to keep it beginner friendly. So JWT basically, so when as I just said, इनकोडेड टोकन होता है जो तुम सर्वर पे जनरेट करते हो एंड देन यू सेंड इट टू द क्लाइंट और फिर क्लाइंट अपनी हर रिक्वेस्ट के साथ उसे वापस भेजता है. नाउ व्हाई दिस? बिकॉज वी वांट टू मेक आवर सर्वर स्टेटलेस. नहीं तो तुम्हें हर सेशन आईडी को स्टेट बेसिकली अपने सर्वर को स्टेटफुल बनाना पड़ेगा और सारी सेशन आईडीज का एक यू नो ऑब्जेक्ट बना के रखना पड़ेगा मेमोरी में, विच इज नॉट आइडियल इन सच सिनेरियोज, राइट? और द अदर पोटेंशियल सॉल्यूशन इज कि तुम हर रिक्वेस्ट को पहले वेरीफाई करो इफ इट इज कमिंग फ्रॉम ऑथेंटिकेटेड प्लेस and then you process the request, but then again it's a cumbersome process doing the same thing again and again, redundant, not again ideal. This is the solution. This is the industry-wide accepted solution, JWT, right? इसके तीन parts होते हैं, ये बता दिया. Now algorithm can be of multiple types. There are a lot of type of algorithms. Uh, yeah, you see all these algorithms. You can pick anyone. I'm gonna pick HS256 for our web because again, it's not a very huge app, right? And it's industry-wide accepted. So, yep, payload. Yep, of course, we are gonna create one, and then a string. ठीक है. So that is what we are gonna do today.
If we come back to our server, right? So now we need to understand. Let's build auth-related controllers, because that is where JWT will play vital role. And after that, we are gonna understand verify JWT what it is, right? So what is this auth.js, right? Let me create auth index.js, right? यहाँ पे you can create login router refresh. Let's create login first, right? So login. I think login might just wait to, yeah, login.js, right? And is string function login request from a response. No, module dot export equals to login. And what I'm gonna do is I'm gonna do a module dot export equals to login, ठीक है? और ये लॉगिन आएगा यहाँ पे और यहाँ पे और ये जाएगा डिलीट। कूल। Good. Now let's go to the login controller here and let's see what we have done. Okay, we would need bcrypt.js as well. Uh, yes, I didn't pick the most ideal solution. Refresh controller has to be the one. But ठीक है, चलो let's build login controller. ये भी समझा देंगे आपको, ठीक है? तो bcrypt.js को पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं। cd before that, let's just verify if it is still there. Alright, so bcrypt.js, I think is still there. Version 3.0.2. One thing is for sure, it must have been broken. Yeah, 2.4.2. Anyhow, we will see about it. Right? यहाँ पे आके what do we need is सबसे पहले तो ये तीनों इंपोर्ट करेंगे एंड मॉडल में लेट मी सी यूजर आईडी इज देयर, राइट? एंड व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग इज यूजर आईडी मॉडल. I think this should be good. Yeah, no. Right, record. Let's see यहाँ पे कितना तो 2 बार
सॉरी तो होगा मॉडल्स like this. This should be, yeah, this is working. Right. So Bcrypt JSS, what Bcrypt JSS? Let's take a quick minute to understand what Bcrypt JSS is. It basically Bcrypt is an adaptive function. Basically, Bcrypt use is uh, so in our database, we would not want to store the user sensitive details like password as is, like let's say यूजर ने पासवर्ड किया XYZ कुछ भी रखा तो तुम डेटाबेस में उसे ऐसे ऐसे रखना नहीं चाहोगे XYZ को, because if your database gets compromised, it's the whole sensitive information goes right, it's well exposed. So how you save sensitive information is in using encryption. Bcrypt लाइब्रेरी क्या करता है, डेटा को एनक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्ट भी करता है कम। तो कुछ भी डेटा आया, आई कैन शो यू क्रिएट यूजर, राइट। तो क्रिएट यूजर में बेसिकली ये सारा डेटा आया पोस्ट रिक्वेस्ट में, राइट। और सिंस हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड ही वाज द मोस्ट सेंसिटिव डेटा, हमने आई मीन मैंने उस टाइम पे bcrypt से हैश कर दिया और हैश पासवर्ड को सेव किया है यूजर आईडी ऑब्जेक्ट में। नाउ व्हेन यूजर इज लॉगिंग इन, यू वुड यू जस्ट कैन नॉट, यूजर से तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते राइट वो एनक्रिप्टेड पासवर्ड तुम्हें दे। वो तो अपना यूजुअल पासवर्ड ही देगा XYZ, बट डेटाबेस में इट्स stored as in encrypted format. So how would you do that? So that is where bcrypt will come here. तो bcrypt क्या करेगा, जो हमने डेटा आई मीन जो हमने पासवर्ड यूजर मॉडल से फाइंड किया है, राइट, उसको बेसिकली हमारा एनक्रिप्टेड पासवर्ड हो गया और जो पासवर्ड यूजर ने भेजा है उसको कंपेयर करेगा एंड इट गिव्स अस अ बूलियन इफ फॉर। तो ट्रू फॉल्स में ट्रू है तो यानी कि द यूजर इज जेन्युइन, if it is false then the password is wrong, and then you send 401, right? So yeah, that is about bcrypt.js. So we have imported it. Now what we are going to do is we are going to get username or password from the body, request body, right? Let me put some enters. Let me, हमारे पास तो यूजर नेम और पासवर्ड आएगा या रिक्वेस्ट बॉडी में। हम क्या करेंगे उस यूजर नेम के बेसिस पे यूजर आईडी मॉडल से एक यूजर को फाइंड कर लेंगे, राइट। यूजर आईडी मॉडल से हम उस यूजर को फाइंड कर लेंगे। नाउ व्हाई इज दिस एग्जैक्ट, what this राइट। अगर हमें कोई यूजर मिला ही नहीं उस यूजर नेम के बेसिस पे, तो व्हाट वी आर गोना सेंड इज वी आर गोना सेंड कि भाई स्टेटस में 401 जेसन में हमने डाल दिया कि मैसेज नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड, राइट। या बट इफ यूजर मिल गया है तो हम क्या करेंगे,
right? Dot exact doesn't mean anything, doesn't make sense at all, right? That is the first thing. अगर हमें यूजर मिल गया है तो हम क्या करेंगे, हम दोनों पासवर्ड्स को कंपेयर करेंगे। दोनों पासवर्ड कौन से, वो पासवर्ड जो हमें यहाँ से मिला है request dot body which user has sent, and the other password is found user dot password जो हमें डेटाबेस से पासवर्ड मिला है, राइट? नाउ so this is how you will get a match। अगर पासवर्ड्स मैच नहीं होते हैं, which is our next condition here, तो हम अगेन 401 भेजेंगे, बट इस बार the message would be भाई पासवर्ड doesn't match, ठीक है? करेक्ट। Now, cool. What I'm thinking is, parallelly in my brain, I would need to match all these so that can I do like पैकेजेस में एक नया पैकेज बनाऊं अगर मैं एटलीस्ट यस and dot package dot json, right? And I share some constants here, right? In text dot json, name would be at the rate repo actually here constant version को रहने दो, ये हो गया, ये हो गए हमारे दो फाइल। हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, राइट? तो आई कैन जस्ट राइट export that doesn't work, export on user not found, right? Fonts user not found response equal to this. Let me just do this, right? I'll tell you why I'm doing this. Just want to quickly check if it works. So if I go to my previous portfolio, how I was handling it, right? And things. So if I come to this package.json, it means you can get out of them. Right? These here constants, right? And if I can font user node found as fonts equals to required
if I just can send this, and it would be great. Similarly, password doesn't know. Right. Matter of fact, let me just do this from here. So how can I make a new request from the client? Very good. Please, you're good by here. Like, why you let me have some water, please? Right. Request localhost 3400, right? And it's a post request. Let me just do a channel log web dot log inside login, right? And then if I come here, API v1, and what is login? Login post body, uh, what's the username? Let's do, let's do a sure, and let's do a password type format, and let's just send. And why was it refused? Uh, Let me just do a API. Let me try and implement the rate go at the rate correctly here on spend. Okay, I'm definitely missing something. So for that, we'll ask AI.
In Turbo Repo, what's the version of Turbo Repo? Oh, version it was written some gets written. How can I get up back in with expensive file goods 13 and 10 second use that I have here packet here instead of repo in the same turbo repo and name already. I think it is because let's see. All right, please be a good bit and run anything. Wait a second. What is index of this file? This error. Error. Unnamed my it's as
Uh, I will be using these codes in both ways. Audio in both in how can I manage that using one file in because again if I will have to create two different files, then there will be some error. This dependency would have been the right word. Right, no, that's not working. What can we do? What can we possibly do? Not the again, not human solution. Either if I continue here, wait, okay, yes, in this is second, why this error is coming? यही तो है यार. अच्छा और भी तो है सॉरी. Okay, as it is undefined. Wow. And if I'm not wrong, this will get fixed by adding this line. App dot
for this line does correct. So if I come here, sorry, I will have to be here, and then this is the first I'll have to say to use. Now if I come here, I'll send message is not found. Cool. So now you understand what I did. I basically created a different package altogether for all these kind of constant values so that the string doesn't change every time, and I can just copy this in both. I can use both it in front end and back end. So बार बार मेरे को string value check नहीं करना होगा. The only issue now I'm facing is with this thing. Yeah, how will I use this in React? Just do this. Let me ask ChatGPT. New chat reason in turbo repo v1.0. What was the version again? 1.3. I have packages which is index.js file which is dot now how can I import this in my v6 React 19 app? So how about I go here to using npm run that. Quickly, let's just check, right? As a matter of fact, close. मैं बोला इंस्टॉल करने होगा भाई. Fine. npm install report packages white space. Let's just want to have a quick verification. Cool, right? And then my home page. Let me just do this.
Yeah. And then run the cool. From here on the console. Okay, that is our errors that I do have to do. Let's spend some 10-15 minutes on this. Let's see if we can get it done somehow. Wait, I think I did not save it. Dude, that is I is what I ran here, right? Because I wrote that. Uh, or I can do one thing. Let's try one thing. Oh, downstairs. And close this server. Okay. APM ID. When I go to my disk, right? I just don't do this. I do this. Right. And main thing I'm running that. Let me quickly verify two things. यहाँ पे we are doing this, right? And then in my home page, we are doing this. And then here, I'm doing this. And it fits. But I think this would run. Should run.
I will not use import statement outside a module. Uh, you give me solution. Declare the variable at one place only, and then from the package code type the destination can be served as I need to import it import React and React. All right, in that case, let's see what the surface. But it is a Java script so how to do for that. Meanwhile, let's do game. Cool. Here it is running. I am using Intune. So let's see that. This looks promising actually. हम बेसिकली एक पैकेज कर रहे हैं जो हमारा ESM इंडेक्स लेगा और index.js फॉर्मेट. अच्छा दिस इज packages application name not user. Okay, this will generate cool. Let's do that. That is actually good. That is actually a good solution. This put on user not found. Right. So
pizza. UCP. और यहाँ पे नाइस, जैसे नाइस। So in that case, now it should work both at both places. Cool, and here, sorry, npm and if I do this, and how it will, how it will import in new JS app. Alright, this is good, but that is right. Server is not good. Client is good. npm ID, because I think node modules के साथ पिछला प्रॉब्लम था eliminate. Alright, guys, give me a second. Let me take a seat. Yeah, I'm back.
मेरा पैकेज पड़ा हो रहा है। Getting this error. This is how I this is that is what is I'll tell you why is it is it did not break. So if I do a send, user not found. Let's go. Cool. Let me close everything. Let me explain you what just happened and let me revise it as well. So हमने क्या किया? I'll start with the issue. The issue was मैं यहाँ से लॉगिन कंट्रोलर से कुछ रिस्पॉन्स भेजता है यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग देन इन माय रिएक्ट ऐप मुझे सेम स्ट्रिंग को कॉपी पेस्ट करना पड़ता देयर इज अ पॉसिबिलिटी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्क्रिपेंसी तो व्हाट आई वांटेड वाज कि मैं एक जगह सारे कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करूं और वहीं से दोनों ऐप्स में इंपोर्ट करूं राइट नाउ सिंस वी आर इन अ टर्बो repo we have the you know I don't have the right word, but we are, have basically we can what we can do is we can create a package, and from there we can, we can declare the our constant pair, and then we can import it from there. ठीक है? That was the first step. तो हमने यहाँ पे declare कर दिया और वहाँ हम import कर देते. But the thing is, this was being declared in ESM फॉर्मेट और वहाँ पे मिसमैच हो रहा था नोड जेएस में मैं अलग तरीके से इंपोर्ट कर रहा हूँ रिएक्ट में मैं अलग तरीके से इंपोर्ट कर रहा हूँ एंड बोथ ऑफ देम एंड बी सेम अब मैं यहाँ पे दो फाइल्स अगेन नहीं बना सकता क्योंकि सेम थिंग वही बात पड़ जाती है डिस्क्रिपेंसी वाली तो व्हाट ChatGPT suggested was to use this library tsub right and what happens when we do tsub is इट क्रिएट्स दिस डिस्क फोल्डर यहाँ पे दो टाइप की फाइल बना रहा है और अब पैकेज और जेसन में हम दोनों फाइल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं राइट विद द हेल्प ऑफ tsub
So that is pretty much what we are doing here. Right. Copy, I just have to create constants here. Hmm. Dot, dot big. Now, is there a way that when I create new variable in index.js of backwards to um, and build just runs on its own, right? That what just happened. Concurrently doesn't make sense to me here because we are using filter, right? Pipeline depends on build. This is good actually. But the issue is to think about it. Uh, can you explore option to remove for me? We do like if first condition something is changed in index of of package build with it on its own and that these things both and have using it. Second is if any point of time that slash build that got command of either here and then can we build it and that
There are a lot more apps that you can which uh, are really dependent of these two things. The and package and React in one app. These updates to it was right. And then now you can enter go in the nope, it's not what I want. I'll go with first for now. Let's keep it like this only. कभी जब चलाना पड़ेगा फिर because yeah, and me and one that creator is good to use maybe just like yes, thanks. कैसे करना है भाई
No, 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 no. Oh, I just do this easy packages, acquisition content, between one text. Cool. Let me close this. Let me close this. Let me have it here. Cool. Right. Abhi, let's quickly move ahead. Password doesn't match. Right. Password doesn't. Actually, passwords don't match. Pass. Right. 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 Come here. I should be able to do a comma and a paste, copy and a paste. ठीक है. And the server should not be ideally. Right. Let me just send or cool. We are here, right? Now comes the actual part of tokens, right? तो हम दो tokens बनाएंगे, access token और refresh token, right? Access token की validity होगी 1 दिन की और refresh token की 7 days की, because again it's not a very you know, how do I put it? Similarly, let me just put it here. This is right. Yeah. Yep. Dot sign. So just give this right. इतना सब करने का मेरा वो नहीं है इस बार. I'll just do a user ID here. ठीक है. और since it's from user ID model, I should say found user dot underscore ID. ठीक है. और यहाँ पे हम देते हैं एक सीक्रेट बेसिकली, राइट? तो सीक्रेट बना लेते हैं. सीक्रेट्स आर फॉर if I take a JWT, right? This part I forgot to tell you earlier. If I take any JWT I put here, I would be able to, you know,
destructure it, right, and decrypt it. I'll be able to see everything and all the sensitive information, right? So for that, this secret comes in play. This secret is, stored at a safe place. What it does is basically creates a, this secret should be unique and hidden. So this basically prevents anyone from having, JWT to break in, right? So let's quickly, create uh, two secrets, one for access token and one for refresh token. So require with token and a dot random bytes dot no, and to string and then go ahead. This gives you this unique string which would be our secret. So this is for sure I'm gonna change after the stream, but yeah, we can put it in the process.env file. Similarly, we can put one in uh, refresh token. Two secrets, right? This is how we create these secrets. Yes, I'll create later and save. And then I'm gonna put these in cookie and then I'm gonna send the response. तो cookie में हमने refresh token डाला, HTTP true रखेंगे, secure true रखेंगे, same site none और 7 each देखेंगे उसके साथ में, right? और access token हमने response में भेज दिया. Now how are we accessing cookie is again another good question. अच्छा response में जाते, so that is good. And then why do you need this cookie parser at all? कर रहा है cookie parser. अच्छा app dot use cookie parser कर रहा है, तब भी यहाँ use कर पा रहा है क्योंकि similar है, right? So let's do that as well, not use. Let me open this. Vite app cookie parser. Let's quickly just have a visit. What version it is? 1.4.7. One 4.7, right? Install console. Cool. I mean, sorry. पहले कौन सा हुआ करता था 1.2.6, so we can use it same. Although documentation में भी same ही लिखा हुआ है. ठीक. So we go to our this place, this index. Right. And then I paste it. And then I put it use to be part of that. Right. Inside login हम delete कर देंगे. And this is our login controller.
पूरी पूरी जॉब और इसको हम ऐसे यूज करेंगे. हाँ, one more thing, if there is no username or there is no password, then also we need to return bad request status code 400 message dot bad request bad request. Right. Bad request response bad. Cool. और इसको अब हम डालेंगे पूरे को ट्राई कैच में. यहाँ से लेके ट्राई कैच कट कर देंगे हम. तो नहीं यहाँ पे और एक अच्छा कि सारे ट्रैक वालों से बात कर लेते हैं भाई. देखो 500 something went wrong. Yes, that seems to be created. But yeah, try catch है, try catch है, कुछ डाल देते हैं. Try catch है. Try catch तो हर जगह बराबर है. Right. Logger है ना. Error in login. Something very wrong. I can just do a send it. Don't need to send the whole string together. Cool. This is what we are gonna do with our login controller. Let's come here to a feed login controller. Right. Yep, yep, yep. Cool. Commit source packages. हम करो सारे पैकेजेस डाल दो. कंटेंट का नाम देते हैं. कंटेंट को डिवाइड भी कर देते हैं. मैटर ऑफ दैट. Right. Yeah. Eat on and package. Right. Source
Yes. Let's remove this element of fact. Let me just copy this. Determine. Determine. Uh, Sorry. It, uh, right. Right. And close all. Now we do this. Let's create our next uh, refresh route. Right. Let's build for refresh route. So if I come in here, this is the refresh controller. One of tools think I should not copy blindly. Rather, let me create refresh dot js, right? Or is or right. And we're gonna do a module for export refresh. Now what we are doing in refresh is we are basically refreshing the file. Yeah, this is an interesting thing. Let's do. Let me tell you. Right. You need this structure LA. And secondly, you need JWT. Right. Then, right. अगर हम क्या कर रहे हैं रिक्वेस्ट से कुकीज फेच कर रहे हैं अगर कुकीज में JWT नहीं है या कुकीज ही नहीं है ऑल टुगेदर तो हम रेस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं 405 401 एंड वी आर सेइंग प्लीज लॉग इन राइट और विद दिस we will need our package again export from is log in response equals to right और इसको यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे हम कूल ठीक है अगर है तो हम उसे रिफ्रेश टोकन को जो अब भी जस्ट हमने कुकीज में सेट किया है उसे लेंगे और वेरीफाई करेंगे अब वेरीफाई करने के लिए अगेन वी विल हैव टू पुट दिस सीक्रेट
और अगर it is a success then we do this. What this does is an interesting thing. Let me tell you. Async error decoded. हमें अगर एरर आ रहा है तो हम 403 भेज दे रहे हैं और यहाँ से इसे हटा ही देंगे हम, ठीक है, और इसे कर देंगे सेंड स्टेटस, ठीक है दोस्तों। और अगर हमें मान लो एरर नहीं आ रहा, हमारा डिकोड हो गया है टोकन, राइट, तो हम क्या करना है, फाउंड यूजर, हम एक यूजर फाइंड करेंगे यूजर आईडी मॉड्यूल से, जहाँ पे फाइंड नहीं होगा, ये होगा फाइंड बाय आईडी, और if I'm not wrong, हम यहाँ पे सिर्फ वो दे देंगे। तो अभी हमने लॉगिन में क्या सेट किया था, यूजर मॉडल आईडी, राइट, हम यहाँ पे वो ही दे देंगे, राइट। अगर यूजर नहीं मिला तो टेल हिम ही इज नॉट वो, राइट, टेल हिम ही इज अनऑथराइज्ड, और दिस विल अगेन गो हियर, unauthorized, राइट। ठीक है, वरना हम क्या करेंगे, एक्सेस टोकन बनाएंगे यूजर के लिए और उसे वो दोबारा भेज देंगे। नाउ हाउ डज आवर एक्सेस टोकन लुक लाइक, इट लुक्स लाइक दिस। और हम उसे दोबारा उस रेस्पॉन्स में भेज देंगे। दिस इज हाउ आवर refresh looks like, comma refresh, I can come here and do a refresh. Cool. Now we refresh, 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 control that. Right. Now at the same time, let's understand verified JWT. ये भी अब अपडेट होगा। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सिंपल है, उस दिन भी डिस्कस किया था, राइट, JWT वेरीफाई में हम टोकन डाल रहे हैं जो कि हमें ऑथर से मिला, अगर और उसे एक्सेस टोकन सीक्रेट में डाला, अगर वो है तो सही है, राइट। यहाँ पे सेंड स्टेटस कर देंगे 403, और नहीं तो रिक्वेस्ट में हम यूजर आईडी नहीं डाल सकते, दैट्स द थिंग। फिलहाल के लिए इसे ऐसे ही रहने देंगे, लेट्स जस्ट अपडेट यूजर आईडी विद यूजर मॉडल आईडी। इसको भी ऐसे करो, अपडेटिंग मिडिल कमेंट।
ठीक है, इसमें कर देंगे हम क्लोज अदर्स, और यहाँ पे हमें दिख रहा है साइन अप का और लॉग आउट का। Now sign up का is a bit tricky. Logout का is pretty straightforward. So let's do a quick logout first. और उसके बाद sign up का करेंगे. And I will tell you everything. So is function. Wait a second, refresh में डाला है क्या? Module dot export equals to logout. ठीक है ना भाई? और यहाँ पे लॉग आउट, यहाँ पे लेट्स डू अ लॉग आउट। कूल। लॉग आउट में क्या करेंगे हम? वही सेम थिंग फ्रॉम द अदर टू लॉग यूजर आईडी मॉडल उठा लेंगे एक बार JWT उठा लेंगे, राइट। और हम क्या करेंगे, अगेन कुकीज फेच करेंगे। अगर कुकीज हुई JWT में सेंड, 204 तो नहीं है, 204 तो गलत लिखा है, दैट इज फॉर श्योर। बट अगेन दैट्स द होल पॉइंट, राइट। अगर कुकी है ही नहीं, 204 भी इसमें खत्म करो। व्हाई वुड यू? अगर है कुकी तो हम क्लियर कर देंगे। और क्लियर कुकी में ऑप्शंस देने का क्या मतलब? Why are we giving options here in here? Set name is it why is it how less everything? For now, let's keep it this way. Right. This is our, again, what is the use of user ID model or JWT? Nothing, right? It's the simplest implementation. Okay. Okay, cool. Thanks a lot, AI. Now that is why I think AI is good. Spots minute errors. See, lockout and controller. दोस्तों हमारे पास अब दो ऑप्शन है, या तो हम थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड करके साइन अप भी कर ले, या साइन अप हम करके भी कर सकते हैं।
I'm not wrong, sign up create user ही आएगा. It's not as such hard, but still I don't want to, you know, make it clumsy, cramp up a lot of things in one screen. कल फिर एक बार Vite दोबारा से देख लेंगे. Right. So let's keep it for tomorrow. Right. आज के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो. आई कुकीज पास करना, JS, JWT, refresh token, access, right? There's a lot to learn today. I hope आपको समझ आया हो, आप इतना कैप्चर कर पाए हो. That is also right. If not, you can ask at any point of time in the comments. Uh, since no one is watching today, but hopefully someday someone will be watching it. If you have any questions, you can ask me in the comment box. I would be happy to help you. Right? And if AI makes significant progress, you can of course ask AI as well. Right? I hope आपको इस स्ट्रीम लगी हो, देखने सीखने को मिला हो. मिलते हैं फिर आपसे अगली स्ट्रीम में जहाँ पे हम साइन अप का वो बनाएंगे कंट्रोलर. और कल सारे कंट्रोलर्स हम फिनिश कर देंगे. ये सारे things are like pretty simple one liner, no, one liner controllers. It would be pretty easy for us to do. ये दोस्तों तो मिलते हैं आपसे. मतलब राधे राधे दोस्तों.